Hello, and welcome to another episode of this, whatever this is. If you're listening to this on YouTube, you are subscribed to my live streaming channel. And today is, what is it today? Today is Saturday, February 19th. If you are listening to an audio version of this on my podcast, then you are either listening on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Ghana.com, JioSavan, wherever you listen to audio. And I hope that if you like it, you subscribe to it on that platform and you share it with your friends or colleagues or family members or whoever else you think might benefit from it. This podcast is called Vimo Talks. This channel is Vimo Live. Right now, I'm speaking live to a bunch of people in the chat. There are 9 people here right now. I hope that numbers will increase in due course of time. Today, today I'm going to talk about authority. I know I have spoken about authority before, and I know I keep coming back to this thing. But the reason I keep coming back to this thing is because it's important. And because every couple of days, somebody makes an argument that makes it seem like, for some reason, we have all been hypnotized into thinking that the only way, the only really effective way to know something is if someone tells it to you. Like the Guru Shishya Parampara is very well known. The other day, I was watching Hari Sultan's live stream, and they were hilariously reviewing some videos by Islamic, YouTubers who are talking about things like which direction to face when doing this, how to go to the bathroom, how to perform sexual activity, etc. And there is no dearth of such people in our own religion, Hinduism also. I say our own because culturally, most of us are born and grew up inside Hinduism as a frame of reference for as far as worldviews is concerned. But we do go through this a lot. And if you want to have a discussion about philosophical or theological topics or religion of any sort with anyone in India, one of the questions that comes to you was, who was your guru? Like they want to know who taught you what you know, because apparently you cannot have conversations of about religious philosophy if nobody actually imparted that knowledge to you. And I think, oh, by the way, hello to everyone who's listening in the chat. Please feel free to leave your comments and questions in the chat as I go along. When I get done with my initial intro, I'll get to it and we can continue talking about whatever you want to. And today I will also perhaps be taking callers. Maybe I'll leave a link in the chat and you guys can join in through audio or video and you can talk. But yeah, what I wanted to talk about was that this the one of the reasons the Guru Shishya Parampara, or the who is your guru, or what tradition do you follow, etc. One of the reasons these things are asked often is because there is a need to maintain religious hegemony. In the case of Hindu culture, it means Brahminical hegemony. Because we know things using multiple methods, right? If I see a tree and I have doubts that it's a tree, then I ask the person standing next to me, hey, do you see a tree also? And if they see a tree also, then my reason to believe that what I am looking at is real is reinforced. I can continue asking people. I can ask 10 people, 100 people, 1,000 people. If everyone says that there is a tree there, then we have all reached a kind of, like, it's basically the scientific method. I saw a tree. I hypothesized that it is a tree. I verified my observation by consulting other people. And then we all went and touched the tree, and that may count as experiment. And that's how we know. This is something not only atheists but people from all walks of life do it constantly on an everyday basis. And religious people also do this. But because religious people have this additional need to justify their belief in the supernatural, things you can't see, things you cannot explain, they are trained, no matter what their religion. By the way, this argument from authority thing is so common, more in India, but everywhere in some way or another,
that it's mind boggling. People seem to think that you can not know anything unless someone tells it to you. And the method, that is, which is testimony, that this guru said this, that person said this, they are so well known, so famous, so wise, they must be right, it's not possible for it to be wrong. This respect for authority has now seeped into politics also, because we all know about netas who say something, but then all evidence is pointing the other way, but people will still believe them because they love that neta so much. So hegemony, religious hegemony, is kind of maintained by denying every method other than testimony. And we are all looking at the side effects of it. So that is the general thing that I want to talk about today. Let me look at the comments a little bit. Sundarji was the first. Hi, Sundarji. I saw you made a comment. We'll get to it. Jasmine says, Vimo, have you read books by Philip K. Dick? Man in the High Castle is awesome. I have actually. I have read some books by Philip K. Dick. Man in the High Castle, I have not read. I started watching the series, but I have not gotten through to the end of it. Raktim says, why do you think underage should not watch your stream? You said that in one of your live stream. I don't want a parent calling me up and saying that I'm burglawing their child. That's why. That's the main reason. It's a content. Children are not able to make legal decisions about their choices. If a child watches this and says something somewhere, I don't want a parent to call me up and say तुम्हारे स्ट्रीम को देख के मेरे बच्चे ने ऐसे किया. हमारे देश में irresponsible parents की कमी नहीं है. Like, I'm a content creator also, and sometimes what we will get is that, like, there are TV channels which put out TV serials, and the channels call up the TV channels saying कि ये serial दिखाना ही बंद कर दो क्योंकि मेरा बच्चा खराब हो रहा है. अरे भाई, you are a parent, you're supposed to be in charge of your child's media consumption habits. Make sure your child doesn't watch it, right? And it was not even like, I can understand if a TV show is blatantly encouraging murder and violence, then you have a reason to complain. But even so, if a program is declared as being not fit for children's consumption, no, or not fit for consumption by children, then it is the parent's job to take care of that aspect of their life. It's a parent's job to make sure that the child does not consume things that they think is bad for them. बच्चे पैदा करते हो और फिर दूसरों को बोलते हो कि तुम इनकी केयर लो, ये कैसा पेरेंटहुड है? That's why. Samad says Islamic Vastu Shastra, another extension of Hinduism's cultural extension. No, so this, I think, would be one of the fortunate, uh, I don't know how to refer to it, one of the fortunate outcomes of cohabiting with different religious people. America, all over America, there are all over Europe, there are yoga studios. There are people who believe in karma. In Islam, we the other day we were talking about how Islamic scholars are nowadays having to include the theory of evolution in their explanation of the Islamic worldview. So mixing will happen. Mixing is good. Mixing is how new religions are formed, new ways of looking at life are formed. There is there was a science fiction novel, I don't remember by whom, but it kind of describes a futuristic religion which is a combination of Christianity and Islam, and it is called Chrislam. I think it may have been someone from Arthur C. Clarke's generation, but I could be mistaken. Sundarji says, can you explain types of fallacies and circular arguments in separate live stream or just videos if possible? Sundarji, I can, but there is already a lot of content on this on YouTube, and I don't want to do things that have already been done. If anyone wants to have a separate conversation about a specific thing, I'm happy to do so. By the way, does anyone want to come on screen and talk? Let me know. I will put a link in the chat, and you can click on it, use video and audio, or if you don't want to show your face, just audio is also fine. Wait, I'll just put the link and I will type something. Click here to join live stream using audio, video. Spacebar. Yes. Right. I have added a link. If anyone wants to come on screen and just talk, you can. We can discuss something, or if you disagree with me, we can debate. Kshitij says authority figure to logical traditional thinking. Vimo can't explain how knowledge comes from nowhere. This proves divine source of Vedas sarcasm. Oh, okay.
Thank you for saying sarcasm. Kapil IDK says, "Wake up, babe. Wemo is live." हैं? किसकी बात कर रहे हो? Baldeep says, "Hi Wemo. Hello everyone." Hi Baldeep. Welcome. Rutvija says, "Hello." There was someone who came for the first time. I saw their comment, but I hold on. Tony. Tony says, "Hi, joining for the first time live." Thank you, Tony, for joining. You're most welcome. Samarth says, "Shaktiman band kar do because I cannot stop my kids from jumping from balconies trying to imitate him." Yeah, ye bhi hua tha. When Shaktiman, the TV serial, was like really, really famous and on Doordarshan, there were children jumping off the balcony. So there are multiple accounts about this. Like, one thing is that there was one kid who jumped, and it was for some other reason. But then some people use that as an opportunity to go after the serial, and the serial has responded by showing an educational segment at the end of the episode, and that's how that worked. So we already have two people here, Tony and Sundarji. Let me take Sundarji first because he was on the stream first. Hi Sundarji, can you hear me? Yeah, I can able to hear you. You can able to hear me. Yeah, I can hear you. Go on. Thanks for the topic. The knowing and believing is the most critical topic. It is the what do you call Yeah. root of everything we know. Either it can be Yes. religion or our science, whatever. Everything is will come from this one seed. Knowing and believing. So Yeah. powerful. I can't able to think what to tell. Okay. So Nothing. do you think that you have any beliefs that are irrational? Yeah, Like yeah, what? true. Irrational. I won't put religion under that basket, or at least to some age, at least like 16 or up to 18, I would say, So because we you will be you under the influence. you do have religious beliefs. I had, but not now. Okay. So do you have anything right now that you think is irrational? Irrational. I had some phobic about transgender people like a year or ago, but now I realize it is nonsense. It should not Okay. be. So, see, why I'm saying this is, see, I'm not afraid to tell my comment. Even Okay. I can change. Even I have some irrational things, even because of unavailability of information. We would be fed with some misinformation about something. You Even mean some people would unavailability have of information? that one of the reason. The other Yeah. thing is we would have been flooded with misinformation. If, for example, like how Joey Rogan talk about transgender people or something, they would Yeah. tell one incident to justify their homophobic thing. One incident could be some rare, extremely rare scenario. They Hmm. would say, transgender woman, they have beat the entire woman people in every sport like that. There would Yes. be one incident, but they would point that one incident to justify the entire Oh yeah, yeah, homophobic totally. argument. There are also people who are like they use this to justify a whole lot of other stuff also. They will use their personal experience to make a generalized statement about an entire category of the population. Ki, like, look at how rich they are. Why do they need a reservation and that sort of stuff? Yeah, at the same time, when I was like in college, still in my college, I used to believe. Uh, I can't able to quote word. I will quote and what do you call SCST scheduled tribes and scheduled caste people. They used to enjoy a lot. They used to be very rich. They used to commute against BMW. That kind of thought I had in college. Then I Okay. started to read lot of stuff, how right Yeah, wing yeah, yeah. used those arguments to bring. Then I realized I was stupid. Oh, How I felt how ashamed long to ago? I believe How those things. how long ago was this? Around 2015, 16. 15, 16 years. Okay. I was like that about 10 years ago. So you're clearly better off than I am. I used to write answers on Quora saying, yeah, caste system does not really exist in India. I have never encountered caste system and all that. And I used to hear those arguments when I started my career. I used to hear Hmm. those arguments from people. They used to say, no, there would be some one guy, if it belongs to Dalit, he would have Hmm. been enjoyed a lot. He wouldn't have gone to college that much.
he would have get benefits from the government schemes or whatever. But they Okay. used to point that one guy as an example to Yeah. generalize all the lists are like this. Yeah, yeah, yeah. The moment I realized that I was wrong is from the government data, how many people are affordable to go to private school. That data was taken in Tamil Nadu. From Yeah. that, I realized, that, oh shit, I believed in a wrong thing. Oh, yeah. Uh, Also, credit to you for like realizing that you did believe a wrong thing, because a lot of people do find out that they believe in the wrong thing, but then continue to believe it in any way. yeah, but like that, many people could be. But I realized that when I see a lot of data, then I started to search for those kind of information. So I Okay. put little effort to understand why I had those thoughts. Because Okay. thoughts won't come from the heaven, right? It won't directly come from the sky falling to our grave. No, it will be Hmm. fed from our society. It will be fed from the people we know, we talk to, we see, our neighbors. So those will be fed into our brain. First, we Hmm. have to understand why those thoughts come to us at the first place. Because I belong to some privileged family, understand that I have been clouded with misinformation. Yeah. So Our understanding upbringing how I has, got this, as in, our upbringing has prevented us from getting access to a lot of things in life, that like there is no replacement for lived experience, and that part of knowledge we cannot have unless we listen to the people who have had lived experience. yeah, exactly. Yeah. If I had So not faced Sundarji, any discrimination, so Sundarji, a bunch of other people have also gotten added to the queue. So okay, if sure. you have any other point to make, you could make it quickly. No, 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 you can carry on with other people. Thank you for the opportunity. I've been very nervous. Thank you. First Like time one I'm of in these days, like today, it is not my intention to have the like audience talk back thing the whole episode. I okay, wanted to do it for a few minutes, but a lot of people have come in, so we may be able to do this for longer. But some other day, sure, sure. I'll do it for a longer period of time. Cool. Okay, sure, sure. Thank you for the Thank you. Thank opportunity. you. Thank you. Right. So wow, so many people. I will get to the comments also, but Tony is here. Hi, Tony. Hi, Vimo. How are you? I'm good. I'm good. How are you? I'm doing fine. This is the first time I'm getting onto your show live. Uh, Okay. I've Okay. been, I've Welcome. viewed your videos a lot, and in fact, you have even answered some of my comments. Like once I asked number of the number of channels that you Ah, are yeah, yeah, going yeah. live. Yeah, so that's me. Were you the Okay. person who said that I should reduce the number of my channels? No, 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 no. I didn't say that. I Because a wanted lot to of people know. say that also. Oh, no, no, no. I haven't said that. I just want to know how many. I want to know all the names of all the channels so that I can have a look at that. Oh, okay. No, But then I actually, you remember, shouldn't. See, yeah, my you said plan is no. that it is hard to do justice to all the channels. So my Ah, plan is that I will focus on this one, and the main channel that I have. Like this one is Vimo Live. Then okay. there is a channel called Vimo, just Vimo, and then there is a Yeah. Hindi channel called Vimo Explains. So Hindi. what I'm going to do is that I'm going to do all of the stuff here on this live streaming channel, and Okay. whatever clips are produced from the live streams here, I will use them on the Vimo channel, and the Vimo Okay. Explains channel I'll kind of withhold for now. So that is the Okay. plan, All right. because it's That's really hard nice to anyway. maintain three channels at the same time. Hmm. I was directed to this channel through Science is Dope. Ah, okay. Yeah, and that's how I got in. I got to know about you, and quite interesting, very practical, very modern ideologies. I mean, ideas basically. Ideas. Yeah, Ideology is a loaded word these days. yeah. That's why I changed Yeah. it. Okay, Thank you so so much. I don't have anything to say personally, but I go with all 99.9% of whatever you say. I agree to that. So I, Okay. yeah, I'm just getting onto that. Okay, so then let's make this interesting. You said 99.9%. So what is the 0.1% of what I say That's you something don't agree with? unknown. I'm just giving that a possibility for something Oh, okay, unknown that okay. may prop up later. All right, all right. Cool, great. Okay. Look, I'm from Chennai anyway. Okay. Oh, Yeah. nice. I was in Chennai. I went to Yeah, I know journalism that. college in Chennai. Yeah. There's Sasi Kumar, right? You know, Yes, ACJ, yeah. Asian College Yeah. Journalism. Yes, yes. I'm also a bit old, not as much old as him, but okay, I'm 53 anyway. Oh, okay. So Yeah. you're 14 years older than I am. Yeah, sure.
I did in did my college in 86, 89. 89 I completed it. Okay, Oh, okay. 1989. Yeah, I was in school. I was what? I was in no, no, no. I probably was in first standard. no, no. LKG. I was 4 years old then. Yeah, no problem. But you got up you got up fast. Yeah, I guess. Yeah, 14 What a years. You life. traveled fast. Yeah, that's right. So it's nice. It's nice talking to you. I'll be listening to you anyway. Like if All right, all I right. don't know, like if this is this the stream where I can actually just get in and talk to you or Some episodes are like going to be like that now, and some okay. episodes not so much. When I Okay. have a guest or a special interview, then no, unless No, yeah, there I are understand. special circumstances. When I'm just Okay. by myself, and I'll tell people if I'm okay to for taking guests. All And right. if you at some point of time want to talk about something specific, you can always message me on Instagram, and we can arrange Oh, something. well, I don't use Instagram and even Or what is Twitter, called. or Twitter also works. I have this Twitter account, but I don't use that much. WhatsApp, okay, WhatsApp is there, and YouTube is my primary source of all information. Generally, Oh, okay. Okay. So I you can get just keep an eye on the community tab on the channel and leave a uh-huh. comment there maybe. No, anyway, I'll join Twitter. I'll try to follow you on Twitter, though I don't Great. verify the check that very often, but I'll do that. Great. Okay, Great. great talking to you. Thank you. Same here, sir. Thank you so much. Thank you. Call me Tony. Yeah. Ah, no, it's okay. Okay. Chalo, bye bye. Yeah, sure. Bye. Right. And the next person is Rajiv. Hi, Rajiv. Hi Bimo. Hello. What's up? Hello Bimo, can you hear me? Yeah, I can hear you. Go on. Yeah, my view was, do you think that excessive importance to rote learning contributes to the tendency to accept authority Yeah. during Yeah. childhood? Yeah. I think rote learning is one of the curses of our education system because I don't know about you, but when I was in school, I knew of children memorizing mathematical like solutions to math sums. They used to memorize and then write in exams. So the one thing that this achieves is that is that they actually don't understand what they're doing. And rote learning is also arguably something that is a remnant of religious tradition because we have this you have heard from people, right? Like we have an oral tradition and all that. Like gurus used to recite things and students used to memorize it, and then when they got older they used to recite it and their children used to memorize it, and that's how knowledge was passed on before writing. Yes. So I think one of the side effects of that is that our schools still today do rote learning. It's very unfortunate. And and for children for 6 to 10, the most important should be given to develop a reading habit and writing habit, but instead there are small chapters and children are just encouraged to by heart the answers and by heart the spelling, and that's it. So Well, I'm not that, an that educationist, so I don't know what is good thing or what is bad thing as far as children are concerned. But there is some science to support the fact that till a certain age, children are not actually suited to writing. So it is good that they absorb things by doing things, by learning, by playing, etc. So there is some case to be made in favor of that. When I speak of rote learning, I'm talking about rote learning in standard 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is the bad part. For young children, I yeah, don't know. They have special psychological needs, and I'm not an expert in that field. yeah, thank you, that's all I wanted to say. Oh, okay. Thank you. Thank you for joining, Rajiv. Thank you. Right. Now we have Dheeraj. Hi, Dheeraj. Hey, Vimo, can you hear me? Yes, I can hear you. Go on. Hey, thanks for having me. I mean, I just want to say that when I first started reading your blogs and listening to you on your podcast, I was just like, oh my God, like so many of the things that you express, I like that was exactly the same things that I determined was like was right. That's the most Yeah. common response I get. Like, Yep. oh my god, I could not have said this better myself. And I usually cheekily respond with, I know, that's why I did it. Yeah, I saw that. I mean, I've just been like thinking about
God and atheism and all of these things for like about 10 years now, and I just never really found the need to like express all of these things because I was like, who would listen to me anyway? But then I Ah. heard you, and then I was like, wow, okay, maybe there is a market out there. Anyway, so about the topic, knowing and believing, I think Hmm. that the thing that may help me when I was just getting into religion and philosophy and all of those things was just understanding the nature of information that we come across, and trying to figure out where is this coming from. I mean, essentially it's epistemology, right? Hmm. Like who's where did this particular piece of information come from, who actually Yeah. determine this, Yeah. did they experience it firsthand, did they hear it from someone else, did they then try to verify it independently, and only after rigorous checks did they determine that okay, this actually is some reliable piece of information. Just understanding that itself was like a huge game changer, because once I realized that, everything else that I came across, I Fell started into to place. process in the same way as well. Hmm. And Yeah. that helped me. And not just that was not just about new piece of information coming through, but also existing beliefs that I had. That was all Yeah. based on information that I was That's the provided. hardest And part, actually. A lot of people, like my channel's banner image had the words "examine your beliefs," but I realized that Mhm. examining beliefs is not hard. People do it all the time, and examining other people's beliefs is also very hard. The your part is the hard part. Most people understand these things, but they don't Mhm. want to apply it to themselves. And if you do that, you are a skeptic. That's all. Yeah, I think that's where the second barrier comes in. Like after Yeah. you realize the nature of information, is that you know with some information you can process it logically, and then you can try and determine okay, what is right and wrong. But then when it comes to topics or beliefs that you already hold, that's where you hold it because it appealed to you, most likely emotionally, and then to challenge that, to Hmm. evaluate your existing beliefs against new information, with the Yeah. likelihood that your existing information is going to be like you'll have to discard that. That's where uh, You get a that set of you get a set of tests that you must apply to all information that comes before you yeah, believe it. And yeah, once you realize, like, that's the definition of honesty, isn't it? It's commitment to truth. If you yeah. I find mean, out that something is not true, then you let go of it. yeah, honesty, integrity, that's when you have that challenge, that's basically where your values are tested. And yeah, Yeah. that eventually leads you to whether you believe the right thing or not. And Yep. it's a constant and ongoing process, and if you think about it, that's sadly one of the reasons why not a lot of humans can continue doing that, because to be in that constant state of being skeptical of the information that you receive, and Yeah, it's quite counterintuitive. Like, it's you're not yeah, supposed to have to worry about some things. And when you yeah, find out that no, you actually do have to, like, we live in an age when most of the information that comes to us through media sources is completely false. So the amount of skepticism we have to exercise in the course of everyday life, every single day, is yeah, monumentally higher than what we had to do a decade ago, or, like, our parents did. So exactly. And yeah, and also there's the evolutionary part where because we grew up in communities and we trusted other people, yep. it's kind of difficult to forego that and say, hey, I'm going to distrust everything right now until I critically evaluate it, Yeah. which is No, not actually, which is not that's so here's the thing. वो जो कार्ल सेगन का quote है ना, extraordinary claims require extraordinary evidence. Mm. I Mhm. think there are many claims which we don't actually need to bother with. Like, I gave the example of people going to office and the road being Yeah. blocked and somebody Mhm. coming and saying sadak khuda hua hai. You don't need to Yeah. examine that. You Yeah, I need mean, to after some evaluate point, things on a basis. How important is it, seriously? I can take the U-turn and I can get to office. But if yeah, I someone is mean, saying, listen, reality is a simulation, then you have to, oh, okay, why? Tell me why you think so. So that is the thing. Every single thing we cannot check. But for yeah, important stuff, we have to.
Yep, absolutely. So Yeah. yeah, I mean that's basically what I feel about it. I know, uh, you know, I just whoever when I meet new people and we talk about this topic, most important point for me is that about epistemology, and I think I've told you with this before also. Hmm. In our series, like that's the most important thing. Is like it starts from there, and as long as you know that your starting point is correct, and your end point, as long as you apply logic and all properly, then you have a chance of being right as well. So that's the most important part. Yes. Yes. Yep, that's pretty much what I wanted to say. Great. Thank you so much, Dheeraj. Thank you. Thank you for joining. Hey, no problem. Take care. Bye bye. Okay, so we had a nice bunch of 5 to 6 people who, for the first time ever, I did this. I think I like this. I'll do this more often. Every once in a while, I'll get someone who wants to debate, but we'll see. But this is fun. Um, Shubh says, "Have you checked out the channel of Isaac Arthur? He's a futurist and he makes great content. I have bookmarked Isaac Arthur's channel, and whenever I'm writing, a lot of my science fiction writing uses his ideas. Like, so if you have read Darshan, then you will know Darshan, by the way, is a science fiction story that I have written, and you can get it at instamojo.com/vimo, VIMOH. It's a science fiction story set in the year 2050 in India, and it's got political flavor. So whenever I write stuff like that, I go through Isaac Arthur's channel and I watch a lot of his videos on topics that I'm interested in, and he does a great job of not only explaining what the thing is, but also going into some detail about where this thing might end up in a few years. We have another person online. Their name is Sagar, but their device is not connected. Sagar, are you here with us? I can't. Let me remove you, Sagar. You can join again. There is some error happening on your device. Baldeep says, first time on your channel, hope to contribute to the discussion. You Nice to have you, Baldeep. Thank you for joining. Samarth says, Shaktiman, no, okay, already read that. Alien says, hi Vimo, I'm here to testify my alien abduction, which totally happened. Sure, I might have ingested a random mushroom in the forest, but trust me, I saw them with my own eyes. Okay, we have Shailesh Joshi here with us. Let me see. Shailesh, can you hear me? यस Hi Shailesh, I can hear you also. Go on. हिंदी में बात कर सकते हैं हाँ, बिल्कुल हिंदी में बात कर सकते हैं, बोलिए। आपका क्या कहना है टेक्नोलॉजी के सिवा थोड़ा ज़ोर लिबरलिज्म से बोलेंगे शैलेश, थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे। विदाउट टेक्नोलॉजी क्या लिबरलिज्म एथिज्म सारी जो मॉडर्न आइडिया सरवाइव कर सकते करते तो थे। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी लिबरलिज़्म और एथिज़्म थे। भारत में मेजर भारत लार्ज में ईसा पूर्व 650 बीसी में नास्तिक थे। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनका एथिज़्म बहुत अलग प्रकार का था। वो मटीरियलिज़्म था। वो था कि अगर मुझे कोई चीज़ दिखती नहीं है, तो मैं उस पर विश्वास क्यों करूँ? पर था। टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है मटीरियलिज़्म या भौतिकवाद के लिए। एथिज्म के लिए तो नहीं है पर लिबरलिज्म के लिए तो है ना वैसे लिबरलिज्म के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी से पहले वो भी थी। प्राचीन ग्रीस में एथेंस नाम का जो सिटी स्टेट था वहाँ डेमोक्रेसी थी। भारत के कुछ हिस्सों में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी थी। कलिंग जो किंगडम था मौर्यों से पहले, वहाँ कहा जाता है कि कई हिस्सों में डेमोक्रेसी थी, मतलब लोग तय करते थे कि उनको कौन गवर्न करेगा बट विदाउट टेक्नोलॉजी। वो बहुत स्मॉल स्केल में होती थी क्योंकि इतना ज्यादा हाँ, कागज टेक्नोलॉजी ने पॉसिबल हर चीज़ को ग्लोबल बना दिया है, पर स्मॉल स्केल पे थी ये चीज़ें। तो ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही ये सब संभव हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही ये सब संभव हुआ? नहीं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले भी कई जगहों पर लिबरल सोसाइटीज़ थी। जैसे कि मैं आपके ये कहने से सहमत हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ये चीज़ें ग्लोबल हो गईं, पर टेक्नोलॉजी इन चीज़ों का सोर्स नहीं है। टेक्नोलॉजी इन चीज़ों का ग्लोबल एनेबलर है। ओके थैंक यू यही था। और कुछ? अरे अपने बारे में बताओ ना यार। मेरा नाम शैलेश जोशी एक तुम्हारा नाम मतलब शैलेश जोशी है, वो पता था मुझे, कुछ और बताओ। हाँ मतलब
नकली नाम लगा के भी लोग आते हैं। हाँ, वो तो सही है, मतलब वो गलत है। I am by birth I am Hindu. I was used to be atheist, but now I ओके, am following Jainism. अच्छा। तो आपका ओली अर्पित वाली स्ट्रीम में आपने कहा था कि जैनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, पर वो स्पष्ट उल्लेख मिलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जैन रिलीजन में। क्या उसमें ये उल्लेख मिलता है कि वो आँखों से देखे नहीं जा सकते? यस यस। पर वो तो कीड़ों के बारे में भी कहा जा सकता है। तो मतलब वो होता देखो, है ना किसी तो चीज़ के लाइक आई विल मेक इट सिंपल। आई विल मेक इट सिंपल। कोई आदमी आके कोई चीज़ कहता है और बाद में उस चीज़ का प्रमाण विज्ञान में मिलता है। हम हम्म, विज्ञान पे विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि विज्ञान ने वो चीज़ कही। हम विज्ञान पे विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि विज्ञान ने हमें उस बात का प्रमाण दिया। विज्ञान ने कहा जर्म्स होते हैं, ये देखो। माइक्रोस्कोप की वजह से हम इनको देख पाए, ये उनके फ़ोटोज़ हैं, ये उनके बिहेवियर्स हैं। क्या इस चीज़ का उल्लेख तुम्हारे धर्म में मिलता है? हाँ मतलब जर्म्स जैसे के कि पानी, फ़ोटोज़ हैं? मतलब उल्लेख मिलता है कि पानी में असंख्य जीव होते हैं, मतलब जो दिखे देखे नहीं जा सकते पानी में होते हैं, हर जगह होते हैं, ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मतलब बाकी जीव सारी कहा बहुत गया है। सी मैं अनसाइंटिफिक यही चीजें कह रहा होती है हूँ। पर हम्म, मैं ऐसी चीज़ें हर धर्म क्लेम करता है, पर एज़ लॉन्ग एज़ देयर इज़ नो मेथड टू गो विथ इट, उन्हें कैसे पता चला, देन हम्म, उसको सिर्फ़ गैस मानना सही होगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। जैसे हिंदू धर्म में, लोग कहते हम्म, हैं कि हमें पता था कि ब्रह्मांड कितना पुराना है। उसको सीरियसली ना लेने का कारण ये है कि मेथड नहीं है। मैंने अपने हिंदी चैनल पे एक वीडियो डाला है, किस प्रकार भविष्यवाणी करें। उसमें साफ-साफ बताया है कि तुम भविष्यवाणी कर सकते हो आराम से। पर तुम्हारे मेथड्स अगर तुम किसी को ना बताओगे, तो उनको लगेगा अरे वाह! इसको कैसे पता चल गया, जादू है ये तो। इसीलिए मेथड्स ज़रूरी होते हैं। किसी चीज़ का कहीं पे उल्लेख मिलना संयोग हो सकता है, पर जब तक मेथड पता नहीं लगता कि कैसे पता लगा, उसको साइंस मानना किस हद तक सही है, मैं तो नहीं समझता। और मतलब वो होता है कि ट्रीज में भी लाइफ है, और ट्रीज में भी रिप्रोडक्शन सिस्टम है, वो सब मैथडोलॉजिकल मिलता है, मतलब क्या। पेड़ों के बारे में तो हमको बहुत पहले से पता था। पेड़ पैदा होते हैं, पेड़ बड़े होते हैं, पेड़ के सीड्स होते हैं, उनसे और पेड़ पैदा होते हैं। ये नई बात नहीं है। ये आधुनिक विज्ञान के आगमन से कई पहले लोगों को पता था। एनीवे, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी 3 और लोग क्यू में जुड़ चुके हैं। चलो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक That was Shailesh, now there is V. Hello, V. हेलो। Hello, I can hear you. Go on. अरे तो मैं तो अभी आपको सर से एक सर लगा के ही कहूंगा क्योंकि मैं आपसे अभी काफी एज में छोटा हूँ। कितने छोटे हो? अभी एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा लेकिन 18 मान के चलिए, उससे कम ही है। 18 से कम हो? अच्छा, ठीक है। बताओ। तो मैं ये पूछ रहा था कि मतलब आप अभी तक कभी एक भी बार एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गए हैं? हाँ, बहुत बार गया हूँ। मतलब कब, किस एज पे? वैसे तो याद नहीं, बट होता रहता है। मैं जब 20 साल का था, तब मैं धार्मिक तो था, पर मतलब धर्म में विश्वास करता था, ईश्वर में विश्वास करता था, पर धार्मिक नहीं था। मतलब ये जो द कर्मकांड वगैरह में विश्वास नहीं करता था। फिर मैं लगभग धर्म के साथ रिलेशनशिप ढीला-ढाला सा चलता रहा, मेरी रुचि ज़्यादातर मिथोलॉजी में थी। एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो बात कर रहे हो ना, मुझे सीरियसली शायद 28 और 30 साल की उम्र में कभी एक हुआ, और वही एक ही बार मुझे लगता है हुआ था। मैं सीरियसली, मैं क्यों हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी के साथ, वो सब। इसी चीज़ की बात कर रहे हो या कुछ और? यही है। है ना? हाँ, एक बार हुआ था, बहुत सीरियस हुआ हम्म। था, और फिर मुझे तो लगा था, पर अपने आप निकल गया। मुझे भी अभी पिछले साल ही हुआ था, नवंबर के महीने में। अच्छा, तो क्या हुआ ये फिर? 15 दिन तो परेशान हो गए थे बिल्कुल ही। नहीं, इट्स गुड टू हैव एक्जिस्टेंशियल लेकिन क्राइसिस एट द एज ऑफ 18। वो फिर चला गया, लेकिन फिर बिल्कुल दिमाग खुल गया मेरा। हुँ, दिमाग खुल गया सब मतलब? समझ में आने लगा धीरे धीरे। हाँ, तो अरे बताओ ना क्या समझ में आया? कि मतलब अल्ट्रा मतलब
पहले तो मैं मतलब मेरे यहाँ वो धर्म वाला बिल्कुल था ही नहीं कहीं। हुँ। मतलब मान सकते हैं मेरी फैमिली भी एथियस्ट ही थी। ठीक है। अच्छा, तुम्हारे परिवार में लेकिन कोई फिर भी फिर ईश्वर पे विश्वास नहीं करता और धर्म में विश्वास नहीं उहुँ, करता। ओके, उहुँ, ओके। तो मतलब उस टाइप का नहीं कि मंदिर-वंदिर जाना या फिर कुछ भी मानना, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। एथिस्ट का मतलब मंदिर जाने वाला, जो मंदिर नहीं जाता वो एथिस्ट हो, ऐसा नहीं है। कई लोग मंदिर नहीं जाते हैं पर फिर भी विश्वास रखते हैं। नहीं तो वो एग्नोस्टिक टाइप का मान सकते हैं उसको। हमारे मेरे घर में है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? तो पहले तो मैं भी इसी टाइप का था, लेकिन फिर जब इससे गुजर गया तो जस्ट हुँ। उसका 100 टाइम्स हो गया। अब मुझे कुछ भी विश्वास ही नहीं होता इन सब चीजों पे। आत्मा, परमात्मा, उससे पहले था? भगवान, भूत प्रेत। हाँ, पहले कुछ नहीं, उससे परसेंट था, पहले था। लेकिन अब तो मुझे ये बताओ, नहीं, एक चीज़ का 100%। एग्ज़ाम्पल दो, एक चीज़ का एग्ज़ाम्पल दो हम्म, जो तुम पहले मानते थे और अब नहीं मानते हो, इफ यू डोंट पहले माइंड। मैं मुझे लगता पहले मुझे लगता था कि भगवान हो सकता है, लेकिन अब गारंटी वो 100% हूँ कि नहीं होगा। क्यों? क्यों क्या? कोई लॉजिक नहीं बनता इसके पीछे। अगर है तो वो किस फॉर्म में है? इतनी ढेर सारी सफरिंग हो रही है इसके पीछे, वो हुँ। देखता है। और अगर देख रहा है तो यानी कि इमोरल है वो। उसके पीछे मतलब हुँ। फिर उसके होने ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। वी डू यू माइंड मी आस्किंग, तुम्हारा परिवार एग्नोस्टिक होने के बावजूद तुम्हारा कल्चरल हम्म, ट्रेडिशन क्या है? हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम क्या है? वैसे एक तरीके से कम्युनिस्ट टाइप के। नहीं, नहीं, कम्युनिज़्म इज़ नॉट अ रिलिजन। आई एम सेइंग रिलिजियस ट्रेडिशन कौन-सा हम्म, है? तो वो बुद्धिज्म। बुद्धिज़्म है। सो बुद्धिज़्म का तो हम्म, डेफिनिशन ऑफ गॉड वो है ही नहीं। यू आर टॉकिंग अबाउट एन अब्राहमिक डेफिनिशन ऑफ गॉड, राइट? हम्म। लाइक जी, नहीं यूनिवर्स तो मैं क्रिएटिंग, मतलब ऑल जो एनकम्पासिंग, आसपास प्रेयर देखता सुनने हूँ वाला। वो मतलब नंबर में जो आसपास मानने वाले होते हैं वो ओवर हुँ। पावर कर देते हैं। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम जिस भगवान के डेफिनेशन को सबसे ज़्यादा एनकाउंटर करते हो, वो यही है, हम्म, मतलब ब्रह्मांड को बनाने हम्म, वाला, सबकी प्रेयर सुनने वाला, वो हम्म, वाला। हम्म, अच्छा, हम्म, ठीक है। सो अभी तुम्हारा ईश्वर पे विश्वास नहीं है और तुम्हें लगता है कि ईश्वर की एग्ज़िस्टेंस इम्पॉसिबल है। हम्म, सो कैन आई प्ले डेविल्स एडवोकेट? मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं विश्वास करता हम्म, हूँ और मैं तुमसे एक सवाल हम्म, पूछता हूँ, ठीक है? पूछिए। क्या तुम साबित कर सकते हो कि ईश्वर नहीं है? साबित करने से आपका क्या मतलब है? क्या किस टाइप का मैं रीजन दूं? तुमने एक क्लेम किया, ठीक है? तुमने एक पॉज़िटिव हम्म, क्लेम किया कि ईश्वर नहीं हम्म, है। जैसे मैं क्लेम करूँ कि ये हम्म, एक कप है, ठीक है? हम्म, हम्म, मैं एक एग्नोस्टिक एथीस्ट हूँ। मेरा मेरा मेरे पास हम्म, कोई क्लेम नहीं है। मैं सिर्फ़ क्लेम्स को रिजेक्ट हम्म, करता हूँ। तुमने एक पॉज़िटिव हम्म, क्लेम किया कि ईश्वर नहीं है। हम्म, तुम क्या करोगे? हम्म। तुम जवाब में क्या बोलोगे? साबित अगर कोई करने को बोले तो क्या बोलोगे? बस नहीं है तो नहीं है। उसका मतलब नहीं, होने का कोई देखो रीजन नहीं लॉजिक में होता है। लॉजिक में एक चीज़ होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ। पता है इसके बारे में? नहीं। बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि जो क्लेम करता है, साबित करना उसका काम होता है। जब तुमने क्लेम किया कि ईश्वर नहीं है, तो साबित हम्म, करना तुम्हारा काम है। अच्छा। सो एग्नोस्टिक एथिज्म एक चीज़ है और एक है नॉस्टिक एथिज्म। तुम नॉस्टिक एथिस्ट हो, तुम कहते हो कि तुम्हें पता है कि ईश्वर नहीं है, पर उसे हम्म, फिलोसॉफिकली जस्टिफाई करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार धार्मिक लोग ये साबित नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है, फिलोसॉफिकली तुम भी ये साबित नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है ना? हम्म। सो या थिंक अबाउट इट। तुम अभी यंग हो एंड आई एम ग्लैड दैट तुम फिलोसॉफिकली इस पोजीशन पर पहुंचे हो, पर अपने आप को थोड़ा सा रेडी करो इसको लेके, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत से लोग पूछेंगे। नहीं, ये मतलब मैंने इसके बारे में सुना था कि वो कौन एक वो यूरोपियन फिलोसोफर थे, क्या नाम है उनका? यही उन्होंने भी कहा था। ए,
क्या नाम था? कांट 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 कांट। कांट? अच्छा। तो उन्होंने भी यही लॉजिक क्या दिया था कि मतलब प्रूव नहीं किया जा सकता कि है, और प्रूव नहीं किया जा सकता कि नहीं है। हुँ। तो ये खाली मतलब डिबेट ही है एक तरीके से। नहीं, मुझे लगता है दोनों उसको जीतने का लॉजिक। अच्छा तरीका है, और जीतने का अच्छा तरीका है एग्नोस्टिसिज्म, एग्नोस्टिक एथिइज़्म। अगर तुम कोई क्लेम ही नहीं करोगे, तो तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ेगा। तुम बस ये बोलो कि ईश्वर का क्लेम तुम लोग कर रहे हो, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, और चूँकि क्लेम तुम कर रहे हो, तुम्हें साबित करना है कि ईश्वर है। हम्म, गेट इट? हम्म, हुँ। एनीवे, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अभी 3 और लोग हैं, मैं उनकी ओर बढ़ता हूँ, ठीक है? अनलेस यू हैव टू ऐड समथिंग। थैंक नहीं, थैंक यू। कूल, थैंक यू सो मच। नाउ वी हैव सागर। हाय सागर। Hello, Vimu. How are you? गुड, गुड, व्हाट्स अप? So I follow your Instagram account and I like your sharp criticism and logical thinking, especially in terms of religion and everything. थैंक यू So मैन, थैंk you so much. yeah, and I, so this is my first time with you talking to you on a live or any kind of show like this, especially with atheists. So, Okay. uh, I actually wanted to share my story of atheism with you, like how I became an atheist, but I don't think so. Is it the appropriate time right now? Because If uh, it's going to take, if it's going to take 2 minutes, then go for it. no, how about 10 minutes or 5 minutes? नहीं, नहीं, 10 मिनट्स तो नहीं हो पाएगा सर, It's क्योंकि okay. और It's अभी okay. अभी लाइन में बहुत सारे It's लोग हैं। okay. It's okay. But I बट just wanted to give you one specific person that you should look into while doing your research. So I was I born and brought up in ISKCON family. So ओह Hare वाओ! Krishna. Yeah. या So actually, I don't actually culturally, I was from Bhakti tradition. Like हुँ, हुँ, culturally speaking, mostly, like the reformist movement of Bhakti in Maharashtra, Tukaram and हुँ, all. There is no casteism or Ravidas, you can say. But हुँ, then it got completely appropriate by this Hare Krishna speak. या And then and then I somehow my brother became an atheist. Like he went outside, like he went for his college and everything. He became atheist, and then I followed Indian atheist on Facebook. Like was back then in like 2012 or 2012 or 2011, and then Nirmukta and everything you might know. So यस, so after reading there, and I realized that this is not what my culture is actually. This is what they are imposing from modern way of Hinduism. हुँ, Yeah, but I just wanted to give you uh, like this ISKCON people, especially there is a website called this person called Chaitanya Charan. ओके, ऑन यूट्यूब? He on YouTube and ओके, he runs this website called spiritualscientist.com. ओह गॉड! आई हैव सीन दैट। Oh, you have seen that. Oh my Yeah, God. I remember seeing it, and I remember don't not thinking very much about it, Yeah. for obvious reasons. Yeah, for obvious reasons. And yep. So one thing he says, like when we pose a question like, uh, who created God? Then he Hmm. counters it like the definition of the God itself. Like his voice, he is so smart. A God is someone who Oh, is. let's not make fun of people's way of talking. I'm Just sorry. tell me I'm the just sorry. tell me I'm the argument. so he says that God is somebody who is not created. That's the definition of the God. Yeah, how does he know that? Oh, okay. That's the main point, right? Hmm. If someone is making a claim saying that, see, that's the whole point. The whole point about authority that I gave. Ki if someone is saying here is knowledge that I'm giving you, why would you not ask them how do you know this? Oh, okay. Okay. Right? And if their Okay. answer is that somebody else told me, then the question is how do they know this? The difference between religious testimony and science is that whoever gives you knowledge tells you, here is how I know, and here is how you can also know. Like, here is the microscope, here is the research methodology, here is the exact number of steps you have to take, here are the conditions you have to create in order to know this. Okay. It's pretty Okay. straightforward. But Yes. religious claims के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि बस मान लो.
because I am saying it, or because somebody told me, or because somebody told them. Like I had a Yes. conversation with someone on Quora some time ago, Mhm. and they said ki I only believe in divine sources. And I said, okay, give me an example of a divine source. And they Mhm. cited a religious book. I said, but this book was written by human beings, no? They said, yeah, but it was knowledge from God. And I said, no, but human beings are fallible. They could have made a Exactly. mistake. Mhm. And you Mhm. may be believing the mistake all this while thinking that it is God's word. Mhm. 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 And also, you are a human being, so why should I believe you? Correct. Exactly. Yeah, I agree with you on that point. Yeah. Yeah. So whenever they say that, uh, by definition, God is like there is no one created God, then we should ask them, how do you know that nobody created Yes. God? Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah, that was my big. Anytime anyone makes any claim, Mhm. the Mhm. first question should be, how do you know this? Oh, Not okay. sarcastically, because it's important. It Yes. is important to know how they came about that knowledge. And the answer to that can't be, I read about it in a book. Because if that is the parameter, then you can give them 20,000 claims. I read about that in that book, that in that book. There are 30,000 religions on earth. And everyone has Exactly. claims. Will you believe all of it because it's People somebody ca- said it? people can claim Harry Potter is true. Yeah, exactly. Claiming mein kya hai? I Yeah. can write a book and say that I'm its prophet. Correct. 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 Right? Yeah. 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 So since I have come to USA, I have realized that here also in US, it's completely taken over by Christian fundamentalists in a different way. Yeah, like there is a Mm. handshake between American evangelical Christian creationists Yes. and the ISKCON variety of Hindus. Yes. Yes. There is a there Exactly. is a there is a person called Michael Behe, who came up with this idea of irreducible complexity, I think, and it was he was debunked in court and by scientists. But even after that, there are books with him having a conversation with uh, ISKCON gurus, etc., who keep promoting his ideas, Yeah. pseudoscientific ideas. Correct. Correct. This. Yes. So they also. Yeah. So Yeah. this guy, the concept of creationism, like they have completely the arguments the ISKCON has completely adopted from the Christian fundamentalists, and that's what Hmm. I realized. Even their preaching style ISKCON is and very ISKCON is like I'm no friend to Hindu fundamentalists, right? But even yeah, Hindu fundamentalists have a problem with ISKCON. मतलब ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उस टाइप का response आता है उनसे. The only thing I like about ISKCON is that if you go to the temples, they sell artwork, which is amazing, yeah. and they sell snacks, which are amazing. So But I do you go to the know? ISKCON temples for But snacks. Vimo, those arts were people made by Americans who were from the hippie tradition. Who So cares? this, It's good art. yeah. But the thing is, like, I wanted to share that this guys appropriate that hippie tradition also. Like that's what Hmm. I wanted to be. Like even if George Harrison gave them a big manor in UK, so Hmm. they just made appropriated everything, and now in their lectures they say George Harrison is already in heaven because Yeah, he gave them. So that's how they appropriated everything. And that's like, true. give me one more Although minute. if someone gives them something, it's their right. Yeah, And I if they agree. like, if they steal something from someone, then that's a legal matter. But if someone Correct. is devoted to their ways of Yeah, thinking and gives them yeah, something, then that's none of my business. yeah, yeah. Yep. So Sagar, we I have a couple of thank other you, callers left. Vimo. Thank you very much. And Thank you so much, yeah, Sagar, for calling. yep, yep. Bye Bye. bye. Take care. Now we have logically critical and परम डोंगरे. परम का मुझे शक्ल भी दिख रहा है. होल्ड ऑन परम. पहले लॉजिकली क्रिटिकल को ले लेते हैं, उसके बाद. हेलो हाय लॉजिकली. हेलो सर। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं इंग्लिश मेरी कपिल देव टाइप की, तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा सर। नहीं, हिंदी में बात कर लीजिए और प्लीज सर मत बोलिए. मेरा नाम विमो है, विमो ही हाँ बोल सॉरी, लीजिए. हाँ ओहो गलती से निकल गया सर। ओके ओके वेमो। तो मुझे आपके ही थ्रू पता लगा। जैसे पहले मैं चैनल पे, मैं बिल्कुल कम से कम टाइम लूंगा, मैं टाइम की कीमत समझता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल. नहीं, टाइम लीजिए. अभी मैं मतलब 1 घंटे से ज़्यादा कर सकता हूँ, कोई बात नहीं. वैसे ही परम वेट कर रहा है. ना ना सर, मैं बहुत सर, अभी मुझे ये पता नहीं था कि ये ऑडियो का मैं खुद, आपने पहली बार किया ना ऑडियो चैट शायद मेरे जी, ख्याल जी, जी, से। जी, जी, पहली बार कर रहा हूँ. बाकी मेरी तो इच्छा ही पूरी होगी। मैं तो चाह ही रहा था कि आप ऑडियो शुरू करें। शायद आप 1000 का वेट कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। 1000 तो हुआ नहीं अभी. हो गया क्या? मेरे चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है अभी?
नहीं सर, मेरा पता नहीं, बोलते हैं कि जो एडसेंस है 1000 के बाद शुरू होते हैं, मगर मैंने देखा आपके 800 के बाद ही एडसेंस आ गया था आपके दोनों चैनल पे। नहीं, मैंने वो ऐड देखा ऐड था आते मतलब। हैं, ऐड आते हैं, पर उसके अच्छा पैसे मुझे नहीं मिलते हैं। अच्छा, वो चालू चालू शुरू चालू पंथी शुरू कर दी उन्होंने। नहीं, नहीं, चालूपंथी ऐड, नहीं, इसको यूट्यूब, गूगल का जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यूट्यूब सबसे बड़ा है, और हाँ यूट्यूब हाँ हाँ। कई सालों तक लॉस में चल रहा था, और उनको उससे निकलने का कोई तरीका चाहिए था, नहीं तो यूट्यूब खत्म हो जाएगा, चला नहीं पाएगा, पैसे नहीं है। सो यूट्यूब वालों ने ये अच्छा किया कि हम लोग, अगर तुम हमारे ऐड प्रोग्राम में नहीं हो तो भी हम लोग तुम्हारे वीडियो पे ऐड दिखा सकते हैं। अच्छा, वही तो मैं सोचा इनके सो पूरे नहीं, क्योंकि मेरे को ना ये 15 दिन पहले ही पता लगा है पूरा ये इकोसिस्टम का, ये मतलब जो ये एथिज्म चल रहा है ऐसे, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा। हाँ, तो बहुत नहीं, एक्साइटेड हो गया ये दुनिया के कई हिस्सों में है, पर भारत में, भारत या सब कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो शायद पिछले, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, मैं इसके इतिहास के, मैं यूट्यूब के एथीस्ट सेक्युलर स्पेस के बारे में इतना नहीं जानता, पर हाँ मैं हाँ। बाहर के दुनिया का मैंने देखा, ये लगभग 20 साल पुराना है। अच्छा, मगर मेरे ख्याल में 2 साल से ही मैं तो वैसे ही देख रहा था कुछ कॉमेडी, तो मैंने देखा, वैसे ही देखा एक कौन सा है, तने धूमल का चैनल देखा, तने धूमल से मैंने उसको पता लगा मेरा साइंस इज डोप का। अच्छा, अच्छा। तो फिर मेरे को कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो मैं पूरा पूरा का पूरा चैनल ही छान देता हूँ उनका 2 दिन में 2x स्पीड पे। थैंक यू सो तो मच सर, मतलब आप ही की वजह से मेरे चैनल का वॉच टाइम बढ़ रहा है शायद। हाँ, वो मैं आपका लाइव का छोड़ के, आपका एक तो एक्सप्लेन वाला और दूसरा वाला, अच्छा, तो मेरे पास एक टेक्निक है, मैं पूरा, मेरे को आप पूरा चैनल 2x स्पीड में लगातार देख लेता हूँ मैं। मतलब मेरे पास एक वो 2x मतलब वीडियो बैक पे टू बैक देखते हैं, चलता है। अच्छा। हाँ, ओके, ओके। बैक टू बैक मतलब मेरे को कुछ मतलब वो करना नहीं पड़ता, और जैसे कोई बीच में ऐड भी आ जाए ना, हम्म। तो मैं ब्लूटूथ हेडफोन पे उसको नेक्स्ट वीडियो पे लेके जाता हूँ, फिर रिवर्स कर लेता हूँ दोबारा वीडियो पे, तो बिना ऐड के चल जाता है। आप बड़े मेरे पास चालू मतलब हैं। हाँ, मतलब मेरे असल में मेरी विजुअल प्रॉब्लम है कुछ। अच्छा, तो तो मैंने ऑडियो को सुनने का मतलब टेक्निक बना रखी है, जो कि शायद यूट्यूब को और गूगल को भी नहीं पता होगा। सर आप ये कर सकते हैं ना, मेरा पॉडकास्ट जो है vimoh.in, हाँ vimoh हाँ। डॉट आई एन पे अगर जाएंगे, मेरा पॉडकास्ट मिलेगा, वहाँ आपको सारा का सारा कंटेंट मेरा मिलेगा, पर सिर्फ ऑडियो फॉर्म में। ना सर, वो मेरे को ना मैं थोड़ा ना टॉक बैक यूज करता हूँ, मतलब विजुअल प्रॉब्लम है ना, तो मैं मतलब मेरे को, मैं खाली यूट्यूब ही जाता हूँ, सिर्फ मैं ओनली यूट्यूब ही अच्छा, सुनता हूँ। अच्छा। सो टॉकबैक के हाँ, जरिए आप स्पॉटिफाई वगैरह नहीं कर सकते? ट्राई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सारा कंटेंट मेरे ख्याल से यूट्यूब पे ही है, मेरे यूट्यूब पे ख्याल से मिल जाता है, मैक्सिमम अच्छा, कंटेंट। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, हाँ, नो क्योंकि इश्यूज। यूट्यूब मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीमिंग कंटेंट है, जो मतलब पूरा कॉर्नर्स तक जाता है, हर पूरा अच्छा, एरिया में। अच्छा। तो मैंने बस फिर उसका साइंस इज डॉप पता लगा, फिर उसमें इंटरव्यू था आपका, फिर आपका पता हाँ, लगा, फिर वहां से मैंने फिर आपका चैनल सारा देखना शुरू कर दिया। अच्छा। फिर थैंक यू सो आपसे मच, थैंक मैंने यू सो मच। हाँ, मैं अच्छा लगा फिर आपका बहुत। मैंने आपके पहले फिर एक बार मैंने भी कहा था कि आपसे पूछा मैंने बुद्धिज्म के बारे में, फिर आपने साइंस जर्नी के बारे में बताया, आपने ही बताया मेरे को। हम्म, हम्म। फिर उसके 200 वीडियो से मेरे को मतलब मजा ही आ गया, 100 वीडियो देख ली मैंने 2 दिन के अंदर। 200 साइंस में से जर्नी 100 के देख। वीडियो जर्नी के वीडियो देखने के लिए मतलब वीडियो का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता, मोस्ट ऑफ इट इज़ ऑडियो ओनली। हाँ, सब ऑडियो में, मेरे को पता भी नहीं वीडियो आता है कि, मेरे को कुछ पता भी नहीं, मैं तो खाली ऑडियो ही अच्छा, सुनता हूँ। फिर अच्छा। साइंस जर्नी से फिर पूरा थोड़ा इकोसिस्टम पता लग गया उनका। फिर हुँ। फिर आपने भी इंटरव्यू किया था, आस्था मुक्ति का। आस्था मुक्ति वाले का, हाँ, अर्पित जी फिर का। मैंने सोचा आप इंटरव्यू कर ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बढ़िया ही बंदा पाएगा। फिर मैंने वो आपके इंटरव्यू से पहले ही उनका खोला, तो खाली 37 वीडियो थी, मगर उनकी 37 वीडियो मतलब 1000 वीडियो के बराबर है। हाँ, गोल्ड है, प्योर गोल्ड है। हाँ, मतलब वो मतलब, हाँ मतलब डायमंड ही मान लो, मतलब कोई कई तो मेरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए उससे, हाँ। मतलब देखते ही। फिर फिर आज पहली बार ही उनकी स्ट्रीम होती है ऑडियो। अभी मैं उनके पास भी मेरे एक दो क्वेरीज थी, जैसे मैंने हुँ, आपसे भी हुँ, पूछा था एक्यूप्रेशर साइंस है कि सूडो साइंस है, हुँ। और विपश्यना के बारे में पूछा, तो उन्होंने जो है अर्पित जी ने करी हुई विपश्यना, तो अर्पित उनके जी ने हिसाब बहुत से कुछ किया हुआ है। हाँ लगा मेरे को, मतलब उनके सुन आवाज से लगा मेरे को, उन्होंने बताया कि मैं ज्योतिषी भी कर चुका हूँ, पता नहीं क्या क्या कर चुके वो। वो किसी टीवी चैनल पर ज्योतिषी थे। बट सी द थिंग हाँ इज़, अर्पित जी ने एक काम किया, उनको एट सम पॉइंट रियलाइज़ हुआ कि वो गलत कर रहे हैं, हाँ और उन्होंने उसको हाँ हाँ। छोड़ दिया। ऐसे कितने ज्योतिषी होंगे सोचिए, जो कि टीवी पर लोगों को उल्लू बना रहे हैं। उन्हें पता है हाँ कि वो उल्लू बना रहे हैं, और फिर भी उल्लू बना रहे हाँ। हैं। ना, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, कोई बोलता है ना फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है, हुँ। मैं जिस दिन जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा ना, वो उस दिन घर पे कंप्यूटर बैठ के
इंट्राडे ट्रेडिंग करेगा खाली, और कुछ नहीं करेगा। एग्जैक्टली। जो हाँ, खाली वो इतना इंट्राडे ज्यादा ट्रेडिंग। ज्ञान है तो दूसरों को हाँ, अपना फ्यूचर, उनका फ्यूचर क्यों बता रहे हो? अपना फ्यूचर देख लो। बस वो फ्यूचर ज्यादा लंबा चौड़ा फ्यूचर नहीं देखना, सिर्फ उसको 6 घंटे बाद रिलायंस का डाउन जाएगा, अब खाली यही देखना, खाली उसको ज्यादा अब प्रिडिक्शन बस भी नहीं करनी। सब कुछ निपट जाएगा और वो साबित भी हो जाएगा। मतलब वो अपने आप को हाँ हाँ साबित कर पाएगा कि ये सच है। हाँ, बस थोड़ा ध्यान लगा ले, सारा मंत्र फुंतर फूक ले कंप्यूटर स्क्रीन पे, बस हाँ, इंट्राडे करे खाली। और और उसका अभी पता है ये क्या है? ये लोग इसीलिए इस प्रकार की स्क्रूटनी ना हो पाए, इसीलिए इस हाँ बात का भी ढोंग करते हैं कि नहीं, हम तो क्या, हम मोह माया में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हाँ हम हाँ, सिर्फ आध्यात्म में इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए, ताकि तो उनको तुम साबित दक्षिणा ना क्यों ले रहे करना हो? पड़े। तुम हाथ दे के दक्षिणा क्यों ले रहे हो? अगर तुमको पैसे ही नहीं कमाने तो फ्री में करो, अगर पैसा ले रहे हो तो तुम इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो ना फिर, अपनी फ्यूचर उस पे। एग्जैक्टली, स्टॉक मार्केट में और चले अभी जाओ। और वो भी आया था ना कि वो उसकी बेटी शार्क टैंक पे की हाथ लगा के वो कर लेती है, हाँ ब्लाइंड फोल्डेड। हाँ हाँ हाँ। तो मैं जो ब्लाइंड फोल्ड कर लेगा ना, मेरे दोस्त को बोला, बोला होता है ऐसा, अगर जो ब्लाइंड फोल्ड होता है ना, वो कहीं नहीं जाएगा, सीधा कैसीनो में जाएगा और पूरा कैसीनो खाली वो फ्लैश 3 पत्ती खेलेगा, और ब्लाइंड खेल के उसके पूरा ऊपर आज कैसीनो साइंस खाली स्टॉप ने करेगा। वीडियो बनाया, देखा आपने? हाँ, वो मैं उसका भी पूरा चैनल छान दिया मैंने, 47 वीडियो है, साइंस पूरा देख स्टॉप लिया। का जो आज आज उसने एक वीडियो डाला है, इसी चीज पर हाँ, डाला है, देख शार्क लिया टैंक वो। वाले पे। हाँ हाँ हाँ, शार्क टैंक वाले पे और केबीसी पे डाला है, और वो नरेंद्र नायक का इंटरव्यू भी लिया है शायद। हाँ 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 हाँ, नरेंद्र नायक जी के साथ इंटरव्यू भी है उसी में। हाँ, इंटरव्यू। सर उस साइंस वीडियो को पता नहीं है शायद कि 2 साल से नहीं, ये 6 8 साल से है ये वाला हाँ, गेम मैंने चल सुना रहा है है। ये किसी और टीवी शो पे जाके भी यही किया था इन्होंने, इंडियाज गॉट टैलेंट आई थिंक। ना ना, ये पता नहीं रिवाइव कैसे हो गए, तो नरेंद्र नायक जी 2015 में ही डिबंक, मतलब बिल्कुल उसका धज्जियां उड़ा अरे दी थी, हो पता नहीं जाता है। इतना। रिवाइव रिवाइव का उसने बताया ना साइंस जॉब के वीडियो में कि वो आजकल उसको मिड ब्रेन नहीं बोलते, हाँ ताकि हाँ, लोग गूगल करके माइंड देख ना लें। बैलेंसिंग और आजकल नया नाम ब्रेन देते हैं। ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अगर ये पूरी तरह से डिबंक हो गया ना, तो कल कुछ और नाम निकालेंगे, हाँ एस एक्टिवेशन और समथिंग बोलेंगे इसको। हाँ, कुछ भी बोल देंगे। और मैं एक बात कह रहा था, हाँ सर, ये जैसे अभी ये ऑनलाइन चल रहा है कि ये, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि इंडिया में लोग बेवकूफ बनने के तैयार बैठे हैं, एक बंदा बेवकूफ बनाने वाला चाहिए खाली। हम्म। जैसे यूट्यूब पे जैसे इंडिया क्या, पहले तो पूरी पूरी बताया। दुनिया की ये हालत है। हाँ, मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ भाई मैं बेवकूफ बना लो, बस मेरे को, मैं तैयार बैठा हूँ, मेरे को बेवकूफ बना लो, मेरे पैसे लूट लो सारे जितने तुम्हें हाँ लूटने हैं, हाँ हाँ। और मेरा माइंड भी मेरा हैक कर लो, मेरे पैसे भी ले जाओ, मेरा माइंड भी हैक कर लो तुम। और ऊपर से इसका पता है, कुछ साल पहले मुझे लगता था कि ये सब ढोंग है ऑब्वियसली, पर जो लोग ढोंग हाँ कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये ढोंग है, और जब उनके हाँ पैसों पर बात आएगी तो वो इस पे नहीं पड़ेंगे। पर अभी रिसेंटली हाँ हमने देखा कि एक कोई हिमालय में बैठा हुआ योगी अपेरेंटली ईमेल भेज भेज कर इतने बड़े हाँ, वो फाइनेंशियल धांधली कर रहा था। मेरे को सेबी लगता है का, हाँ हाँ हाँ। वो झूठ बोल रही है, मेरे को लगता है झूठ बोल रही है, क्या पता कोई पॉलिटिशियन हो उसका नाम दे रही, पता नहीं अभी, उसका देखना पड़ेगा मेरे को। हाँ, वो भी ये हो जो सकता है। फाइनेंस ये जो वो भी हो फाइनेंशियल सकता है। फ्रॉड है ना, एक वो है, क्या नाम है वो, चैनल है मनी 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 बाइट्स, मनी लाइफ न्यूज अच्छा। बाइट्स, वो है अच्छा, दलाल, आई डोंट नो। सुचिता दलाल। ना ना, हम्म। अगर आपको फाइनेंशियल, मतलब पूरा शेयर मार्केट और सारा फाइनेंशियल फ्रॉड देखना हो ना, तो हम्म। सुचिता दलाल जिनकी बुक भी आई थी ना, वो जिसपे फिल्म बनी थी, हर्षद मेहता, वो एक अभी फिल्म भी बनी हर्षद थी मेहता उसपे। वाला 2 फ़िल्में बनी थी, हाँ मुझे याद नहीं किस वाले की बात कर रहे हो। हाँ, तो ये जो सुचिता दलाल, आप देख लो, मनी लाइफ न्यूज बाइट्स, ठीक है, उनके वीडियो अच्छा, देखो, वो आपको मतलब सेबी में, शेयर मार्केट में, बैंकिंग में कितनी बदमाशियां चल रही है वो सारा बता देगी आपको। वो 2 जने अच्छा, हैं, उनका एनजीओ है और वो फाउंडेशन है, मतलब उनको जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, बैंकिंग, लोन का सारा उनको पता है। ये मैं उनका देखूंगा, ये वाला सेबी वाला देखा नहीं अभी, लेटेस्ट वीडियो उनका। ठीक है, सुचिता दलाल फेमस, बहुत बहुत फेमस है। ठीक है सर। और सर पर आपने अभी मुझे अबोलिश, एक्चुअली फाइनेंस के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, सो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं बस ये कह रहा था कि अगर ये हिमालयन बाबा वाली कहानी सच है, हाँ हाँ तो मेरा ये जो मानना था कि ये लोग अपने पैसे के मामले में कम से कम हाँ इन हाँ चीज़ों पर नहीं पड़ेंगे, हाँ वो भी गलत हाँ साबित हो गया। क्योंकि अब अंधविश्वास उस हद तक पहुँच चुका है, जहाँ हाँ बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस में रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशंस में बैठे लोग भी इन चीज़ों पर विश्वास करने लगे हैं। हाँ और हाँ ये सिर्फ़ हमारे देश के लिए खतरा ही हो सकता है और कुछ नहीं। हाँ। नहीं सर, मैंने एक, मेरे को ना एक कई दिन, दो सुचेता तीन दलाल, साल येस, येस, आई नाउ रिमेंबर। आई थॉट सुचित्रा दलाल कह रहे थे आप। सुचेता ना ना, दलाल पता है मुझे। हाँ हाँ, ये बहुत फेमस, मैं वही नाम से गलत प्रोनाउंस कर गया मैं, ये तो बहुत हाँ, हो फेमस है, सकता है। वही तो सोचा हाँ, आप नहीं जानते, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत फेमस है। नहीं, नहीं, सुचेता दलाल पता है मुझे। हाँ, और जैसे ना ये
मतलब ये जो मेरे को पता है, जैसे हाँ ये जो एथिस्ट, एग्नोस्टिक और एग्नोटिक एथिस्ट, ये तीनों थोड़े अलग अलग टर्म है क्या? थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए मेरे को। एथीस्ट होता है जो थीस्ट नहीं होता है। थीस्ट का उल्टा होता है एथीस्ट। थीस्ट होता है ठीक जो है। कि ईश्वर में विश्वास करता है। थीस्ट शब्द हाँ का रूट है थियोस। रोमन में ठीक है। थियोस मतलब गॉड होता है। ठीक है। ठीक थियोस है। मतलब गॉड, जो थियोस में विश्वास करे वो थीइस्ट, जो थियोस में ठीक। विश्वास ना करे वो एथीइस्ट, ठीक है? ओके, मतलब गॉट इट। मॉडर्न लैंग्वेज में एथीइस्ट मतलब वो जिसको ईश्वर पे विश्वास नहीं है। ठीक है। एग्नोस्टिक एथीइस्ट है एक प्रकार का एथीइस्ट जो कहता है कि मैं ईश्वर पे विश्वास नहीं करता क्योंकि हाँ ईश्वर पे विश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अगर कारण मिलेगा तो मैं विश्वास कर लूँगा। ठीक है, वो नॉस्टिक कंप्लीटली रूल आउट एथीइस्ट नहीं कर होते रहा। हैं। नहीं, हाँ, नहीं, वो वो नहीं कंप्लीटली है। रूल आउट नहीं कर रहा। नहीं, नहीं, अच्छा। कंप्लीटली रूल आउट किसी भी चीज़ को नहीं करता एग्नोस्टिक एथीइस्ट। अगर आप अच्छा कहेंगे कि ड्रैगन है, तो वो आपको पूछेगा सबूत दिखाओ। ना, फिर खाली एथिस्ट और एग्नोस्टिक एथिस्ट में क्या फर्क हुआ? खाली एथीइस्ट असल में कुछ होता नहीं है। अच्छा ठीक है, खाली ठीक है, हाँ एथीइस्ट का ठीक है। मतलब खाली एथीइस्ट का मतलब सिर्फ़ ये है कि उसको ईश्वर में विश्वास नहीं है। एग्नोस्टिक अच्छा। एथीइस्ट का मतलब है कारण ये है कि विश्वास इसलिए नहीं है। अच्छा एग्नोस्टिक ठीक है थीस्ट भी उसका। होते हैं। एग्नोस्टिक थीस्ट भी होते हैं। एग्नोस्टिक थीस्ट अच्छा। वो होते हैं जिसको ईश्वर पर विश्वास तो है, पर ये पता नहीं है कि ईश्वर है क्या? मतलब अच्छा। क्रिश्चियन अच्छा सही हैं, हिंदू सही हैं, मुस्लिम सही है, मुझे नहीं पता, पर मुझे विश्वास है कि ईश्वर है, इसलिए मैं एग्नोस्टिक थीइस्ट हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। एग्नोस्टिक एथियस्ट सिर्फ वो है जो कहता है कि आई हैव नो पोज़िशन ऑन गॉड, पर तुम हाँ। कह रहे हो कि गॉड है, इसलिए तुम मुझे एविडेंस दो। जब तक तुम एविडेंस नहीं दिखाओगे, तब तक मेरे पास हम्म, विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, और चूँकि कारण नहीं है, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता। ठीक। और आपने एक वीडियो बनाया था कि नथिंग क्या है, तो मेरे को समझ में नहीं आया। नथिंग, नथिंग क्या होगा फिर? हाँ, मतलब उसका उसका तो दैट्स द होल पॉइंट, हमें पता नहीं नथिंग का मतलब क्या है। ना, फिर मेरे को जब समझ में नहीं, कोई नथिंग का फिर मैं मतलब जो वैक्यूम है वो नथिंग है। फिर मैंने आपको आपकी बात थोड़ी आज ही समझ में आई। समझो हमने हुँ, 1 लीटर की बॉटल ली, उसको वैक्यूम कर दिया, तो हुँ, वो उसमें स्पेस तो है ना, उसमें 1 लीटर स्पेस है। तो हाँ। वो मतलब नथिंग तो पॉसिबल ही नहीं है फिर तो। एग्जैक्टली, क्वांटम फील्ड थ्योरी एक चीज़ होती है। अगर आप हाँ उसके हाँ हिसाब से स्पेस को भी देखेंगे, खाली स्पेस को जिसमें कोई गैस नहीं है, कोई एटम्स नहीं है, कोई हाँ मॉलिक्यूल्स, कोई फोटॉन्स नहीं है, वो हाँ एक हाँ फैब्रिक है। स्पेस को बेंड किया जा सकता है, मतलब वो कुछ तो है। स्पेस हाँ जब हाँ, वो बेंड कुछ। होती है ग्रेविटी की वजह से, तभी तो ब्लैक होल बनते हैं। इसका हाँ मतलब है और जो वो। खाली स्पेस है वो हाँ नथिंग हाँ नहीं है, वो कुछ है। हाँ, और और उसको इसीलिए मैं कहता हूँ कि नथिंग का मतलब हमें पता ही नहीं है। हाँ वही तो, मैं पहले तो आपकी बात समझ में नहीं है, मैं सब वैसे ही आपने थोड़ा फिलोसफी मार दी। मगर ये बिल्कुल सिंपल चीज है ये तो, मतलब अगर या स्पेस भी है वो भी कुछ है। एग्जैक्टली, और इसीलिए जब बल्कि। कोई कहता है कि हाँ नथिंग से समथिंग नहीं आ सकता, उस हाँ सवाल का ही कोई हाँ मतलब नहीं है, क्योंकि नथिंग का कोई एग्ज़ाम्पल दो तो मुझे, क्योंकि नथिंग करके कुछ होता हाँ ही नहीं है। हाँ, तो पहले मेरे को समझ में नहीं है, नथिंग मतलब कुछ नहीं है तो उसको नथिंग बोल दिया। मगर नथिंग तो पॉसिबल ही, उसको इमेजिन करना इम्पॉसिबल है नथिंग को तो। एग्ज़ैक्टली। उसको तो अगर हम इमेजिन बोलना भी चाहे तो बोल नहीं पाएंगे, मतलब किसको नथिंग बोलेंगे? स्पेस तो रहेगा अल्टीमेटली। और स्पेस हुँ, का वॉल्यूम भी रहेगा, स्पेस को मेजर भी कर सकते हैं भी, इतना वॉल्यूम है मतलब हाँ, उसका स्पेस को मेज़र कर मेजरेबल। सकते हैं, स्पेस एक्सपैंड कर रहा है, हमें ये पता है कि स्पेस एक्सपैंड कर रहा है, गैलेक्सीज़ एक-दूसरे से दूर जा रही हैं, और स्पेस हाँ की एक्सपैंड करने की स्पीड असल में लाइट की स्पीड से ज़्यादा है। इसीलिए गैलेक्सीज़ की रोशनी जिस स्पीड से हमारी तरफ आ रही है, उससे हाँ ज़्यादा हाँ स्पीड से गैलेक्सीज़ हमसे दूर जा रही हैं। इसलिए कुछ गैलेक्सीज़ ऐसी हैं, जिसकी रोशनी कभी भी हम तक नहीं पहुँच पाएगी। हाँ हाँ, गॉट इट। या और एनीवे ये लॉजिकली क्रिटिकल जी, परम डोंगरे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, गुड। सो वुड ना ना, डू यू फिर माइंड इफ मैं वी तो टॉक सम अदर टाइम? जो ना ना, आप नेक्स्ट टाइम कब आएंगे सर? आप विमो, मैं हर वेडनेसडे और हर सैटरडे आता हूँ। आज सैटरडे है, मैं वेडनेसडे फिर से आऊँगा। ये ऑडियो ऑडियो ही करेंगे ना? ऑडियो रखना सर हमेशा। हाँ, मतलब मैं ऑडियो। ये ऑडियो वीडियो अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। हाँ ओके ओके ओके, आप मेरे को ग्रेट। मैं रिमूव कर दीजिए सर। ओके। जी, थैंक यू सो मच। थैंक। फाइनली 14 साल के वनवास के बाद हमें मिलते हैं परम डोंगरे। हाय परम, कैन यू हियर मी? यस सर। विमो सर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, पूछ लो। आपने बोला था जैसे मतलब जो इंसान रोड पे जा रहा है और रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हुँ, तो क्योंकि वो चीज़ मेरी लाइफ को उतनी इफ़ेक्ट नहीं करेगी, तो मेरे को हुँ, उस चीज़ के बारे में स्केप्टिक होना ज़रूरी नहीं है। मैं अपना हुँ, काम करके निकल सकता हूँ और हुँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या वो चीज़ सही में हो रही थी या जो भी उधर चल रहा था। तो हुँ। मैं वहाँ अपना स्केप्टिसिज़्म बंद कर सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकता हूँ।
बट हाँ। कुछ अगर ऐसे लोग हैं जो रिलीजन को भी उस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी चल रहा है चलने दो, बट वो बस अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस्ड हैं। उनके लिए वो रिलीजन उस रोड जैसा ही है कि चल कुछ है, नहीं है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या हाँ, फिर हैं वो ऐसे उस लोग। वक़्त भी अपना स्केप्टिसिज़्म बंद कर सकते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं नहीं, वो तो पड़ता? पर्सन बाय पर्सन डिपेंड करता है ना। देखो, जो दफ्तर वाला एग्ज़ाम्पल मैंने दिया, हो सकता है हुँ, कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको उस बात से बहुत प्रभाव पड़ता हो, जो कहे कि नहीं, दफ्तर गया तेल लेने, मुझे पता करना है ये सरकार सड़क क्यों खोदती रहती है हमेशा। तो अपनी गाड़ी से हुँ, हुँ, हुँ। निकलेगा, आगे जाएगा, देखेगा, क्योंकि उसके लिए वो ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, अगर वो एक अच्छा। ऐसे शहर में रहता हो, जहाँ पे हर रोज़ धाँधली हो रही हो, इस बहाने से कि सड़क खुदी हुई है, तो वो जाएगा। हुँ, अगर वो सोशली एक्टिव व्यक्ति है, अगर वो सोशल एक्टिविस्ट है, अगर वो चाहता है सरकार को अकाउंटेबल बनाना, तो अपनी गाड़ी से उतरेगा, सड़क किनारे पार्क करेगा, चल के जाएगा, देखेगा कहाँ खुदाई हो रही है, मुझे दिखा तू। हर रोज़ यहाँ खुदाई हुँ, होती हुँ, रहती है। हाँ, तो उसके लिए वो ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए धर्म और दुनिया का ओरिजिन और सोसाइटी में रिलिजन ज़रूरी नहीं है। इन्हें हुँ, 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 एपैथीइस्ट भी कहा जाता है। मतलब वो रिलिजन को लेके एपाथेटिक होते हैं। एपैथीइस्ट, ओके, एथियस्ट एपैथी, जो कि एपैथी से अपने आप को डिफाइन करते हैं। APATHEIST। सो अगर किसी हुँ, के लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है तो नहीं है। पर अगर तुम उनको अवेयर कराना चाहते हो कि तुम्हें धर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं दोगे तो जो धार्मिक लोग हैं वो तुम्हारे बच्चे के स्कूल में घुस के उसकी साइंस टेक्स्ट बुक के अंदर से साइंस निकाल के धर्म ठूंस देंगे, और तुम्हें अपने बच्चे की परवाह तो है ना, तो कहेगा हाँ है, हुँ, तो तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो हाँ, इट्स अ सोसाइटी कंसेंसस से चलती है। जो चीज़ हम लोग सब मिलके डिसाइड करेंगे कि ये ज़रूरी है, हम उस पर ध्यान हुँ, देंगे, और जो चीज़ हम लोग डिसाइड करेंगे कि इट डज़न्ट मैटर, देन इट डज़न्ट मैटर। हुँ, एक समय ऐसा था जब हमको लगता था कि ओज़ोन लेयर मैटर नहीं करती है, और उसके फलस्वरूप ओज़ोन लेयर की बैंड बज गई। पर हाँ, बाद में हमें हाँ, समझ में आया कि ओज़ोन लेयर फटने की वजह से हम सबको कैंसर हो सकता है। इसलिए उसके ऊपर काम किया गया और ओज़ोन लेयर को रिपेयर किया गया। और अब हम ओज़ोन ओ लेयर वाली प्रॉब्लम से मुक्त हो चुके हैं। ओके, हाँ, ठीक है। सर मेरा एक छोटा-सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, हाँ। आपने अभी वो जो अभी आस्था मुक्ति के साथ आपने लाइव स्ट्रीम की थी, उसमें आपने हुँ। बोला था कि अ, जो रिलीजियस लोग हैं वो एक क्वेश्चन करते हैं कि क्रिएशन है तो क्रिएशनिस्ट भी होगा। तो वो उनकी लैंग्वेज में ही उन्होंने ये कर क्रिएशन लिया है तो कि था क्रिएटर भी क्रिएशन, होगा। क्रिएटर क्रिएटर भी हुँ, हुँ, होगा। हुँ। तो हुँ, उस उनकी लैंग्वेज में ही उन्होंने मतलब क्रिएशन वर्ड यूज़ कर लिया, तो हुँ। वो आपने बोला था कि क्रिएशन क्यों बोल रहा है, एक्जिस्टेंस क्यों नहीं बोल रहे? हाँ। तो वो सर समझ नहीं पाया था मैं कि क्या एक्जिस्टेंस मतलब फिर? उसको एक्चुअली कहते हैं कि प्रीसपोज़िंग द कंक्लूजन। अगर मुझे साबित करना है कि अगर मुझे दिख रहा है ये कप, हुँ, हुँ। अगर मुझे हाँ, साबित करना है कि इस कप को किसी ने बनाया था, हाँ, तो मैं इस कप को कहूँगा मैन्युफैक्चर्ड कप, ठीक है? ठीक है। और उस डेफ़िनेशन की वजह से ये क्लियर हो जाएगा कि इसको मैन्युफैक्चर करने वाला तो कोई होगा। हाँ, पर अगर इस कप को किसी ने नहीं बनाया है, तो मैं इसे सिर्फ़ कहूँगा क्या, बंडल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? बंडल ऑफ ठीक है। मॉलिक्यूल्स को बनाने वाला कोई ज़रूरी नहीं होता। तो जिस भाषा का इस्तेमाल करके, ये कप एक्चुअली बुरा एग्जाम्पल था, बट यू गेट माय पॉइंट। हाँ, हाँ, भाषा हाँ। का इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ का जो एग्जाम्पल देते हैं, उस भाषा के अंदर कभी-कभी कंक्लूजन छुपे होते हैं। तो जब कोई कहता है हुँ, क्रिएशन नीड्स अ क्रिएटर, आई डोंट डिसएग्री विथ इट। येस, इफ इट्स अ क्रिएशन, इट ऑब्वियसली नीड्स अ क्रिएटर। बट दैट्स हाँ, बिकॉज़ मुझे पता है क्रिएशन का मतलब क्या है और क्रिएटर का मतलब क्या है। अगर मैं हुँ, कहूँगा स्टोन नीड्स अ क्रिएटर, तो तुम हँसोगे, क्योंकि सबको पता है कि स्टोन्स को क्रिएटर की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? हुँ, हुँ। सो जब हाँ, धार्मिक लोग ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड का कोई क्रिएटर रहा होगा, वो चुपके से हुँ, ब्रह्मांड को क्रिएशन बोलना शुरू कर देते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। और हम उस पे सवाल नहीं उठाते। हुँ, हमें उस हुँ, पॉइंट पे सवाल उठाना चाहिए, क्रिएशन क्यों बोल रहे हो? ये साबित कहाँ हुआ है कि ब्रह्मांड को किसी ने क्रिएट किया था? अगर ये साबित ही नहीं हुआ, तो उसको क्रिएशन क्यों बोल रहे हो? ब्रह्मांड ब्रह्मांड है, हुँ, यूनिवर्स है, एग्जिस्टेंस है, राइट? हुँ। तो मैं उस हाँ, चीज़ की बात कर रहा था, क्योंकि कई बार बातचीत के दौरान सेंटेंसेस में ऐसे 50 छोटे-छोटे चीज़ें ठूँस दी जाती हैं, जिनको बाद में निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब वो बोलें, इंस्टेंटली वहीं पे रोक के बोलना चाहिए कि ये वर्ड एप्रोप्रिएट नहीं है, इसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रिज़्यूम करता है एक ऐसी चीज़ को जिसको अभी तक साबित नहीं किया गया है। हुँ, ओके। समझे ये दोबारा? हाँ सर, मैं वापस से स्ट्रीम देख लूँगा अगर कुछ लगा तो, कूल, कूल, ये वाली। ओके, ग्रेट। ओके, थैंक यू सर।
यही क्या था। पॉइंट? थैंक यू सो मच हाँ, परम फॉर हाँ। जॉइनिंग एंड आल्सो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। नहीं, नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो बाय बाय। दैट वाज़ फन। और चूँकि मैंने कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया था अब तक, मैं थोड़े और कमेंट्स पढ़ भी लेता हूँ। अभी और वीडियो रिक्वेस्ट नहीं लेता, ठीक है? आज बहुत लोग हो गए। अम, Sagar says, "Hey Bimo, I listen to your videos and like your sharp and clear-cut arguments. I want to share my personal story of being a fundamentalist to atheist." सागर तो आए थे। लॉन्ग अगो। अच्छा, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं कुछ देखता हूँ कमेंट। Samarth says, "I was in class 1 when Shaktiman became so popular. That education segment used to start with Shaktiman saying, Thehro, the band protest was so ridiculous, I used to hide from my mom to watch it." नहीं, हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमको आई गेस मेरे परिवार वालों को फ़र्क नहीं पड़ता था हम लोग क्या करते हैं सीरियल देखकर। बट आई वांटेड टू शेयर अनदर थिंग विथ यू गाइस, होल्ड ऑन। अश्विन के साथ मैं बीच में पॉप कल्चर डिस्कशंस करता रहता हूँ, बट बट दोज़ डिस्कशंस विल नो लॉन्गर बी हैपनिंग ऑन दिस चैनल। इसीलिए मैं अभी से एक नए चैनल पर अश्विन के साथ एक वीकली पॉडकास्ट करूँगा जिसका नाम होगा गटर स्पेस, और वो उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ चैट में। प्लीज़ गो सब्सक्राइब टू दिस। मंडे 5 बजे हम लोग मृणाल मुरली, भावेश जोशी और शक्तिमान के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थीम ऑफ एन इंडियन सुपर हीरो। सो अगर किसी को वो डिस्कशन देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग फेसबुक पे एक पेज है, उस पे भी लाइव आएँगे एक साथ। Hmm. Kshitij says, considering people worshipped Arun Govil as Ram, understandable that they think their kids will imitate TV shows. Hmm. Baldeep says, red flags should go up when people stifle the verifiability of the testimonies supporting the authority figures. When people stifle the verifiability of the yeah, red flags should go up. The red flags should go up whenever someone says, बस मेरी बात मान लो, ऐसे ही. Vikas says, Vemo भैया, I think you're reading comments of all of us, so it's good to get answers fast. हाँ, वो भी करेंगे. Like, I think जब ये चैनल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा और 4000 मतलब मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैं इस लाइव स्ट्रीम्स को लंबे करूँगा, 1 घंटे से ज़्यादा, और हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा भी करूँगा। सो देखते हैं, तब शायद वी विल बी एबल टू डू बोथ ऑफ दीज़ थिंग्स। या शायद ऐसे रख सकते हैं कि हफ्ते के इस दिन सिर्फ कोई स्क्रीन पे नहीं आएगा और इस दिन लोग आएँगे और उनसे बात की जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं। Kshitij says, Avatar, The Last Airbender. Long ago, the four nations lived in harmony. If you haven't watched the animated series, give it a go. I have seen it. Of course, I've seen Avatar, The Last Airbender. What do you think I am? A barbarian? Okay, पर ये सब तो क्वेश्चन जो लोग आके स्क्रीन पर पूछ चुके हैं. Baldeep says, creation existence is a solid point. Yeah, people weasel a lot of ideas into their arguments for God. We should be careful about what we allow and what we don't. Anything that has not been proven should not be presupposed. Simple. Alien says, I'm not completely sure whether apatheism can be called a privilege like being apolitical. In some societies it can be, in some societies it can't be. Depends on the power structures there. Stream started 1 hour ago and only 23 people watching live. Really a sad state of affairs. That's all right, man. It's not about the numbers, it's about the quality of the conversations. Anyway, thank you everyone for joining today. This was a lot of fun. I did this for the first time, and I think I'm going to do this at least for half an hour every stream from now on, but maybe not every stream. We'll see. We'll see how this goes. This was a good talk. Thank you everyone who came. Thank you everyone who joined in, and I will see you all on Wednesday at 10 p.m. on this channel at 10 p.m. 10 p.m. bol diya. I'll see you on Wednesday at 10 p.m. on this channel the next time I go live. Thank you for joining. Bye bye.